All right. So a slight recap of what I taught you just now. So lecture is ray optics, and in ray optics will be it is the study of light, and we take light as a ray, and we'll be learning about these topics: reflection, refraction, dispersion, and optical instruments. Okay. Now, some basic properties of light. We could say that uh, light is an electromagnetic radiation, or it's also photons, and in vacuum it moves with a speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now, for any general wave, you can say that the product of wavelength and frequency would be equal to its velocity. And the velocity depends on the medium, while the frequency depends on the source, hence wavelength depends on both. So for a given medium, if I say that for a given medium, I could say that wavelength is inversely proportional to frequency, because the velocity would be fixed in that medium. Okay. Now, energy of energy of a photon or light is simply H E is equal to HF, or E is equal to HC by lambda. And if frequency increases, wavelength decreases and energy increases. Okay. And for the EM spectrum, electromagnetic spectrum, this is simply the uh, simply all the radiations written in the order of increasing frequency. So it starts from radio waves, then microwaves, infrared, then we have the visible light, which is VIBGYOR in reverse, red to violet, then ultraviolet, X-ray, gamma ray, and cosmic rays. Right now, radio waves have the least frequency and the largest wavelength, while cosmic rays have the least wavelength and the largest frequency. Okay, so ये topic मैंने अभी पढ़ा है. All right. Now, getting into the getting into the specifics of ray optics, ये अभी सिर्फ properties of light पढ़ा. So let's just say कि when you have more than one ray of light, ठीक है? If you have more than one ray of light, it's called a beam. Okay, so what exactly is a beam of light? Beam of light. So beam of light क्या है? It's a collection of light rays. Okay, it's a collection of light rays, and now simply we can look at two 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 rays only. दो rays बता के मैं पूरा काम चला सकता हूँ. Now there are three types of beams. Okay, there are three types of beams. First one is the parallel beam. Parallel beam. Second is called the converging beam. Third is called the diverging beam. Okay, so let me just draw these rays. What do you mean by parallel beam? So parallel beam would look like this. Yeah, parallel rays. You could also call them parallel rays. Okay, the arrow implies the direction of ray क्या है. Okay, this is a parallel rays. These are parallel rays or parallel beam कह सकते हो. And converging rays मतलब they are moving towards a particular point. Okay, let me just mark that. इस तरह से रहेगा. Now, it's not necessary that they have to meet. They may or may not meet. Okay, so you have to understand the fact that they may or may not meet, and this is a very peculiar point. This one. Okay, इस point पे वो meet करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, these guys don't meet. Parallel rays won't meet, and I'll just draw them first. उसके बाद लिख देता हूँ ये चीज. And diverging rays basically कह सकते हो कि ऐसा रहेगा, है ना? मतलब they are moving away from each other.
नाउ इसमें यू सी, इसमें ये पॉइंट, इसमें अभी मैं क्या पॉइंट लिख सकता हूँ? आई कैन से दैट इन पैरेलल रेस they never meet. What about converging? They may or may not meet at a point P, नाम दे देता हूँ, at P. All right, point P. Now this one diverging में they may or may not appear, या सॉरी appear नहीं बोलूंगा, may or may not originate, originate, या और थोड़ा जनरलाइज करना चाहिए, ओरिजिनेट थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, may not come from point P. Is this clear to you all? Beam of light. Beam of light में any doubt? Please tell me. Beam of light में कोई doubt? Please you have to respond. Be quick. जल्दी respond करो तो मैं आगे बढ़ाऊं. There are 21 students, only 3 of them have responded till now. All right. Moving forward. Now there is a concept of object and image. Okay, we'll talk about object first. Now object क्या होता है कि there are two types of objects. Okay. ऑब्जेक्ट बेसिकली अभी जैसे तुम अभी मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो यू आर दी ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी हैव टू बी मोर स्पेसिफिक in ray optics because an object, just a moment, can you guys hear me? इंटरनेट अनस्टेबल बताया था, can you guys hear me? Can you guys hear me? Okay. ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है समझना, कि लेट्स से यू हैव सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट कुड बी अ लेंस और मिरर और एनीथिंग. ठीक है, मैं इसको जनरलाइज करके इधर बता देता हूँ कि वी हैव एन ऑप्टिकल एलिमेंट. ये आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ ग्लास स्लैब, आई एम जस्ट ड्राइंग दिस, कुड बी एनीथिंग. ओके, दिस इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट. मतलब क्या हो सकता है? मिरर, लेंस, एक्सेट्रा, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म वगैरह जो भी हो सकता है. ठीक है, नाउ इसमें अभी there are two possible types of objects. ठीक है, the first one is called a real object and the second is called a virtual object. Real object and virtual object. Okay, now ये रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखना. रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि there is a point in space, there is a point in space near that real object, and उस point से there are diverging rays coming out. ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कैसे रेस बनते हैं? रियल ऑब्जेक्ट से कैसे रेस बनेंगे?
diverging rays. And this is before the interaction. Before interaction, object is a point before the interaction. Before interaction मतलब क्या, मिरर पे टकराने से पहले या लेंस पे टकराने, इंसिडेंस होने से पहले, इंटरैक्शन और इंसिडेंस, ओके, जो भी रहता है उसको कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, नाउ बिफोर दैट, अगर किसी पॉइंट से लाइट रेज आर डाइवर्जिंग बिफोर इट इंटरेक्ट्स विद द ऑप्टिकल एलिमेंट, such an object is called a real object. Okay, now similarly, virtual object क्या रहेगा? We can imagine that there are two light rays, there are two light rays that was supposed to meet. Okay, there are two light rays that was supposed to meet, but वो meet करने से पहले ही क्या आ गया? वो meet करने से पहले ही कौन आ गया? They were supposed to meet at this point. Okay, they were supposed to meet at this point, but उससे पहले ही क्या हो गया? ये ऑप्टिकल एलिमेंट बीच में आ गया. Understood? So before interaction, they didn't get to meet. Okay, so what are these rays here? ये rays कौन से हैं? These are converging rays. Okay, so this guy right here is a real object, and this guy right here is a virtual object. Okay, understood, everyone? Any doubts here? Clear है ना? पूरा clear है ना, जो मैंने अभी बताया, real object, virtual object? Okay, next we'll talk about images. Images. Now, image क्या होता है? It is something that happens after interaction. After interaction or incidents. After interaction or incidents. ठीक है? Now, again, just like objects, there are two types of images. First one is real, and the second one is virtual. Okay. Now, like we had that optical element जो था, उस तरह से optical element है. Now, light has already interacted with this optical element. Light has already interacted with this optical element. Now there are two possibilities of rays. ना मतलब three है actually, but the third one, parallel rays का तो कोई काम ही नहीं, they are not going to meet anywhere or they won't appear to come from any point. So there is no point talking about parallel rays. ठीक है, but there are two possibilities. अगर light ray after interaction, if they actually meet at a point, they actually meet at a point. Now, see, you need to understand one thing कि अगर ये यहाँ मीट करने से पहले, यहाँ मीट करने से पहले कुछ आ गया तो फिर वो अलग बात है. ठीक है, तो भी इसी को क्या कहेंगे अपने, व्हाट डू वी कॉल दिस? विल कॉल दिस ए रियल इमेज. ओके, एक्चुअली मीट. व्हाट सॉर्ट ऑफ रेज आर दीज आर कन्वर्जिंग रेज.
Okay. Now, if the light rays after interaction they diverge, so we can say that they are diverging from a point. Na? We could say that they are diverging from a common point. एग्जाम्पल्स लूंगा तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगा. जस्ट अभी बस इसके टर्मिनोलॉजी सीख लो बस, और कुछ नहीं. Okay, so they appear come from this point. Okay, so this is called a virtual image. Now, as you can see that these rays are diverging rays. Is that clear? Is this clear to you all? Image and object का concept. Concept of image and object. Please write clear if it is clear. I can move ahead. Okay. Now, the next concept that I'd like to teach you is reflection. Okay, reflection of light. Very important. Reflection of light. Now, let's say कि एक ऐसा कोई random सा surface है. Okay, this is a random surface and ये जो क्या, ये मैंने जो ऐसे ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस जो मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तुमने 9 10th में पढ़ा होगा. ये और ये रीजन क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग साइड एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. रफ स्मूथ का बात नहीं है, कौन सा साइड रिफ्लेक्ट करेगा कौन सा साइड रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. नाउ लेट्स से दैट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे. ठीक है, इधर आके टकरा. दिस इंसिडेंट हियर. दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके. आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल गो लाइक दिस. Okay, the light ray will go like this. I'm going to draw two reference lines here. There, I'll be drawing two reference lines. First one is this. इसको क्या कहते हैं बताओ? What is this line called? This is called the tangent. ठीक है, this is called the tangent. And the other line that I'd like to draw is the one which is perpendicular to the tangent, and that point, that line is called the normal. क्या कहते हैं इसको? Normal. Now this is these lines are all defined for this particular point. And what is this point called? This point is called the point of incidence. All right. Now I'll be defining two lines here. ठीक है, देखा देख सकते हैं. I have two perpendicular mutually perpendicular lines, normal and tangent, जिसको यूज करता हूँ इस रे के incidence and reflection को study करने के लिए. Right. Now before that, this is called the incident ray. Incident ray. And what is this? This is the reflected ray. Sorry. Reflected ray. All right. Now,
I'm going to draw two angles. First one is this. इसको कहता है angle of incidence, and the other one is this one. इसको कहता है angle of reflection. Okay. So what is I? I and R. What are they? First of all, let's define them. I is the angle of incidence. ठीक है, ये किसके बीच में बनता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल. ओके, नॉर्मल के साथ बनाना, टेंजेंट के साथ नहीं. ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Now there are two laws of reflection. ठीक है, laws of reflection. So first one is that angle of incidence I would be equal to angle of reflection R. Okay. Second one is that the incident ray, reflected ray, and normal all lie on the same plane. Is that clear? ये चीजें clear है? You must have already learned about this thing in lower classes. 10th standard में पढ़ा होगा तुमने ये चीज. Is this clear? ये जो मैंने अभी पढ़ाया. Please respond. Yes, अर्पित, पूछो क्या डाउट है? चैट बॉक्स में लिख दो क्या डाउट है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन के बाद विल, मैं क्या सोच रहा था कि विल स्टडी ऑल दी बेसिक्स टुगेदर. उसके बाद अपने एक एक करके मिरर्स एंड लेंसेज सबके बारे में अपने देख लेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बताता हूँ, या फिर ओके, आई थिंक वी कैन स्टडी अबाउट मिरर्स. प्लेन मिरर के बारे में बता देता हूँ मैं जल्दी से. प्लेन मिरर्स. तो प्लेन मिरर्स एज यू नो वो कैसा रहेगा? ऐसा रहता है, है ना? दिस इज द प्लेन मिरर. एंड अगर एक, देर आर टू पॉसिबिलिटीज राइट, कि मतलब लाइट रे, इट कुड इट कुड बी, देयर कुड बी एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, दोनों चीज हो सकता है. तो इसमें मैं एक जनरल टर्म्स में अगर मैं बताऊं कि लेट्स से दैट दिस इज an object and this is the image. Okay, this is the object and this is the image. Now if I measure this distance, अगर मैं मिरर से ये डिस्टेंस मेजर करूं और मिरर से ही इमेज का भी डिस्टेंस मेजर करो, आई राइट दैट दिस इज द object and this is the image. Okay, now from the mirror इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं? u, and इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं? v. Okay, this distance is v. So the first property of plane mirror that you need to understand is that u, yeah, v would be equal to negative u. Now what does that imply? ये negative u का मीनिंग क्या हुआ?
What does that imply? Negative u. Can anyone tell me? Opposite side होगा है ना मिरर के एक दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन नॉट बी ऑन द सेम साइड they'll always be on the opposite sides ठीक है so I can just write this as कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है real object and virtual object there are two possibilities right now real object will form a virtual image and virtual object will form a real image this is what happens okay real object क्या प्रोड्यूस करता है virtual image एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करता है रियल इमेज प्रोड्यूस करता है इज दैट क्लियर उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या जान सकते हैं वी कैन राइट दैट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट would be of same size image would be laterally inverted ये सब पता है ना अपने को image would be laterally inverted is that clear any doubts एनी डाउट्स अभी तक जो आज के क्लास में जो भी पढ़ा है मैंने ऑल राइट तो let me just take the attendance of this class I will continue from here okay कल भी मैं ही पढ़ाऊंगा will continue from here ठीक है let me just take the attendance don't leave the meeting all right okay so see you tomorrow